Everyone is talking about AI these days. So I decided to try something new. So for 7 days I used ChatGPT to improve my English. It actually worked and the results surprised me. Hi everyone. Today I'm going to share something new and different as well. So for the last 7 days I used ChatGPT for every single day. And do you know what happened and what I did? And if you also want to know about it, stay till the end because today I'm going to talk about artificial intelligence. It's not a kind of any application, it's an artificial intelligence with whom you can have conversations and you can correct yourself as well. Day 1 आई आस्क्ड चैट जीपीटी ओके, मैंने ये वाला चैट जीपीटी ओपन किया और मैंने चैट जीपीटी से कहा प्लीज़ करेक्ट माई मिस्टेक्स. सो वेन एवर आई वुड टाइप समथिंग और राइट समथिंग ऑन माई फ़ोन that would correct my mistakes or that would correct my sentence or word as well. And this is how I spent my day 1 by the help of ChatGPT. Day 2, I asked ChatGPT, please give me 30 words for 30 days and I will learn these 30 words for my 30 days, like on my daily basis. So it feels like having a teacher which is available every time for you. Day 3, I tried something new. I asked ChatGPT, मैंने ChatGPT से कहा please have a conversation with me and I will answer you and you will have to ask questions to me. But firstly, if you want to have conversations with ChatGPT, you will have to log in over there. और ये देखो मैं भी log in कर रही हूँ यहाँ पर. सॉरी, ये 2 IDs हैं. यहाँ पर मैं एक ID से log in करूँगी, then we will have conversation. Okay, ना सिंपली मैं इसको ओपन कर लिया, मैंने इसको लॉग इन कर लिया इस पर. ठीक है. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू हैव अ कन्वर्सेशन. Can you have a conversation with me in English? You will have to ask some simple questions to me because I am recording myself into the camera and I am telling my viewers that how they can use ChatGPT to improve their English. So please ask me some questions. I will answer and you will have to correct my mistakes if needed. Sure, let's start simple. What's something you did today? Well, Tell me in English. Okay. Well, there are many things which I did. For example, I cooked for my family as well, and then Nice. yeah, many things That which was I did. clear. You could also say, I cooked for myself and my family. Now, follow-up question. What did you cook? Okay, well, I cooked fried rice and coffee as well. Good. Okay guys, मैं कॉन्वर्सेशन को ज़्यादा लंबा नहीं कर सकती, इसलिए मैंने बीच में कट कर दिया बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी. बट दिस इज़ हाउ यू कैन हैव कॉन्वर्सेशन. ये जो ब्लू पार्ट है ना, यहाँ से आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हो. ठीक है, चैट जीपीटी के साथ यहाँ से आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हो. सो दिस इज़ हाउ आई स्पेंट माई डे 3rd. और डे 4th पर पता है मैंने क्या किया? मैंने सिंपली यही चीज़ फॉलो करी और मैंने दोबारा चैट जीपीटी के साथ एक फॉर्मेट में कॉन्वर्सेशन करी. हाउ? मैंने कहा को चैट जीपीटी से प्लीज़ गिव मी 10 टॉपिक्स फॉर 10 days एंड गिव मी सिंपल क्वेश्चंस अबाउट दीज टॉपिक्स एज वेल एंड आंसर्स एज वेल. देन मैंने उन क्वेश्चंस को और आंसर्स को रीड किया एंड देन मैंने चैट जीपीटी से कहा प्लीज़ आस्क दीज क्वेश्चंस टू मी, आई विल आंसर. इफ़ देयर वुड बी एनी करेक्शन नीडेड, आई विल डेफिनेटली try to correct my mistakes, but firstly you will have to correct myself. So this is how I spent my day 3 and day 4. Well, day 5, it was bit hard, so I almost skipped it. क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि कोई चीज़ को डेली फॉलो करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है. सो मैंने ऑलमोस्ट इस डे को स्किप्ट कर ही दिया था. बट उसके बाद क्या हुआ कि मैंने सोचा कि ओनली 5 मिनट्स, मैं 5 मिनट के लिए प्रैक्टिस करूँगी, बट या आई विल. एंड आई जस्ट ओपनड ChatGPT and I just completed my session just for 5 minutes, and this is how I spent my day 5th. It was a bit struggling moment for me, but I spent. Day 6th, something changed. Like I was not translating in my head. Words and sentences were coming out faster. I was speaking out faster, and this is what I faced, or like
what I have seen in myself when I used ChatGPT for 7 days, और 6th डे में मुझे इम्प्रूवमेंट दिखनी शुरू हो गई थी अपने अंदर. जब मैं कोई भी इंग्लिश का वर्ड और सेंटेंस बोल रही थी तो बहुत अच्छे तरीके से बोल पा रही थी. आई वॉज मेकिंग फ्यूअर मिस्टेक्स तो कर रही थी बट वो बहुत ज़्यादा कम थी. 7 आई रिकॉर्डेड माई सेल्फ स्पीकिंग. मैंने अपने आप को बोलते रिकॉर्ड कर लिया. और दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, जो कि मैं अभी कर रही हूँ. वैसे ही मैंने अपने आप को इंग्लिश बोलते रिकॉर्ड कर लिया. एंड आफ्टर दैट आई कंपेयर्ड माई वीडियो विद द वीडियो विच आई हैड बिफोर. मतलब जो वीडियो मैंने पहले बनाई थी काफ़ी टाइम पहले इंग्लिश बोलते हैं, और जब मैंने उन 7 दिनों में बनाई, सो आई कैन ईज़ली सी द डिफरेंस in between both of those videos, because I was making fewer errors. And but if I would talk about before the video of myself, then I was making a lot of errors. But right now I have a lot of confidence. I gained a lot of confidence. But before some days or before some months I was bit less confident, so that's why I was not able to speak English properly. But right now, as you guys can see, I'm able to express my thoughts. I'm able to convey my thoughts in English properly. And this is how I used ChatGPT. I invested my time on a good thing. So if you also want to improve your English without spending your single penny, you can use ChatGPT and you can get 100% results. But you have to invest your time on it, and you will see the difference between before and after. If you also want to complete this challenge, and if you want to guide step by step that how can you use ChatGPT for 7 days for improving your English, then don't forget to subscribe and write or type I'm ready in the comments, and I will give you full guide in my video. I will make a tutorial on this if you guys will say yes. If I will get 100 comments in my comment box on this video, I will definitely make a tutorial of this video. Okay, so don't forget to subscribe and like this video, and don't forget to share it with your friends.